Hi guys, Namaste, Sat Sri Akal, Salam Alaikum, Jai Shri Krishna. I hope you all are doing great. Aaj I'm very excited because after a very long time back, cricket is back, ODI cricket is back, and it gives us great opportunity to make lot of money. आज England versus ODI series का पहला मैच है and I think it is a great opportunity for every one of us to make a good amount of money only if we play smartly. Alright, some key information before we get down to betting is England के 4 main players आज नहीं खेल रहे हैं, that is Joe Root, Josh Butler, Ben Stokes and Jofra Archer. So it gives Ireland a decent chance to have an upset. Second, आज बारिश का कोई forecast नहीं है, which means England and Ireland will have a complete game without any interruption. And third, it is an excellent batting wicket. So it's very important. जब भी आप कोई भी bet कर रहे हो, ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखें because all these factors will have an impact at your betting. Alright, great. So let's get started with betting. Now आज मैं आपको 5 tips दूंगा. 2 ऐसी जिस पे आपको bet लगाना चाहिए और 3 ऐसी जिस पे आपको bet नहीं लगाना चाहिए because I think जितना जानना ये ज़रूरी है कि किस पे bet लगाना है उतना ही जानना if not more is important कि किस पे नहीं लगाना है क्योंकि lot of times we lose money because हम गलत चीज़ों पे लगा देते हैं. Speaking from personal experience, I think that is very very important. Alright, great. So first thing, अगर आप क्रिकेट ज़्यादा नहीं भी देखते हैं ना तो भी आपको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि इंग्लैंड इज़ अ मच बेटर साइड कंपेयर टू आयरलैंड एंड इफ इंग्लैंड विल प्ले आयरलैंड इन इंग्लैंड द चांसेस आर in fact very good chances are that England is going to win the match. Therefore as you can see England के ऊपर अगर आप 100 रुपये लगाएंगे आपको सिर्फ 10 रुपये मिलेंगे. आयरलैंड के ऊपर 100 लगाएंगे तो 700 मिलेंगे. 99.9% England is going to win the match. It is a very safe bet and Ireland can definitely do an upset but the chances are very 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 slim. So अगर आपको एक safe bet खेलनी है आज and you want to make some good money, put it on England. But of course remember anything can happen in cricket but I think it's a great chance. That's number 1. And second option जो मैं आपको recommend करूँगा to put will be on team to make highest first 15 over score. Now again England की betting lineup is much better than Ireland and also England की bowling lineup is also much better than Ireland. So again it is also a safe bet. Of course 15 overs which is 90 balls is a big number of time but again the very fact that England has a much better batting, they are playing in their home condition, great bowling, I don't think Ireland can score better than them. So अगर आपको bet लगाना है again it is one of the safe bet and it gives you good value. तो अगर आप 100 रुपये लगाएंगे 33 रुपीज़ मिलेंगे. So अगर आपको लगाना है तो आप इस पे लगा सकते हैं. I think you will most probably make money until and unless Ireland does something spectacular with their bowling and England get out. So I think ये 2 जो opportunity मैंने आपको बोली हैं, highest first 15 over score and who is going to win the match. So these are the 2 options जिस पे आपको लगाना चाहिए. Great. Now किस पे आपको bet नहीं लगाना चाहिए? Now first thing, total runs in the match. It says over 550 and under 550. Now under 550 अगर आप इसको 50% से divide करें it becomes 275. Now again अगर Ireland पहले बैटिंग करती है and they score 250 or 270 or 280 only then you have a chance that England will while chasing will score a one more extra run and only then you will win. But here's the thing, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है और इवन आयरलैंड पहले बैटिंग करती है द चांसेस आर
अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करती है वो 275 280 नहीं बना पाएंगे इवन इफ इट्स अ गुड विकेट बिकॉज दे डोंट हैव एन एक्सपीरियंस इन द बैटिंग लाइनअप एंड द बॉलिंग ऑफ इंग्लैंड इज एक्सट्रीमली वेल. सो एंड अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर ली और उन्होंने 300 रन कर दिए, अगेन आयरलैंड विल नॉट बी एबल टू चेस. तो अगर मैं जो आपको इतना ही रिकमेंड करूँगा, डोंट पुट इट ऑन दिस, बट इफ यू स्टिल वांट टू पुट इट, इफ यू स्टिल वांट टू, so under 550 is safe, but I will recommend don't put because it's very dicey, so don't put it on this one. Second, there is an option here, first score, again same thing, 280 over 280 under. Again agar Ireland ne batting kari, even though it is a good batting wicket, I don't see them scoring 180, but again agar England ne batting kari, the fact it is a good batting wicket and a not so experienced bowling lineup of Ireland, the chances are that they will score over 280. So it all depends who bats first. So इस पे आप bet मत लगाना जब तक गेम शुरू ना हो जाए, and once the game started then you can, while the game is going on, you can do whatever you want, but otherwise don't really try yourself. All right, and there is another option, highest opening partnership. Despite the fact कि इंग्लैंड ओपनर्स आयरलैंड ओपनर्स से अच्छे हैं, आई विल रिकमेंड यू कि आप इस पे बेट मत लगाना, क्योंकि ऑल इट टेक्स इज जस्ट वन गुड बॉल और वन बैड बैटिंग डिसीजन एंड द विकेट इज़ आउट. सो इस पे भी आप मत लगाना. ऑलराइट, सो 2 bets that you have to, or you can rather bet on is कौन जीतेगा गेम और किसके 15 ओवर के बाद अच्छे स्कोर होंगे, एंड किस पे आपको नहीं लगाना है वो ये कि टोटल रन्स फॉर द मैच, फर्स्ट इनिंग टोटल ऑफ द मैच एंड हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप. सो हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप, फर्स्ट इनिंग स्कोर और total runs in the match to win the match, and $15 overs highest is your bet to go. All right, I hope आप bet लगाएंगे on what I have recommended you, and नहीं लगाएंगे जिसमें मैंने recommend नहीं किया है, and hopefully you will make some money out of it. All right, I wish you all the very best, and do let me know later how did it go. All the very best guys, take care, ciao ciao.